एंड गुड मॉर्निंग। आप सब भी अच्छे होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट कुछ सामान लेने, वो आपको पता चल जाएगा कि क्या लेने जा रही हूँ। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. तुम्हारी ये फोन नंबर ना फोन ना और बेटा और बोले पिज्जा सॉस वगैरह चीज वगैरह। तो गाइस आपको पता चल चुका है हम कहाँ सामान लेने आए थे। तो अभी घर जाकर मिलते हैं। तो गाइस मैं आ चुकी मार्केट से, आपको पता ही चल गया है कि क्या सामान लेकर आई हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, सच में गाइस बहुत ज़्यादा वाली हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अभी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं। ये देखिए तीनों टीवी देख रही हैं और वो आरोही पता नहीं क्यों गुस्सा है। आरोही क्या हुआ? ये तो बोल भी नहीं रही है कुछ भी। क्यों, वो क्या हुआ इसको? कल रात से। अच्छा, तो विक्स वगैरह तो लगाई थी हिंदी ने? लगवा नहीं रही। क्यों? तुम बाबू लगवा लो ना विक्स। तो गाइस अभी थोड़ी देर में पिज़्ज़ा बनेगा, तो हम आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी भी इसी ब्लॉग में आपको बता देंगे कि कैसे कैसे बनाया है दीदी ने। और पिज़्ज़ा हम विदाउट माइक्रोवेव के बनाएंगे हम पिज़्ज़ा, तो वो आपको दिखाएंगे कैसे बनता है। तो गाइस देखिए ये दीदी शिमला मिर्च काट रही हैं पिज़्ज़ा के लिए। मतलब अपनी मर्जी से पिज़्ज़ा कैसे भी बना सकते हो, शिमला मिर्च प्याज टमाटर वाला कैसा भी, पर मुझे तो शिमला मिर्च वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दीदी शिमला मिर्च वाला ही और टमाटर वाला भी बना रही हैं। ये देखिए दीदी टमाटर साफ़ कर रहे हैं क्योंकि पिज़्ज़ा के लिए ये सारे बीज वगैरह निकाल देने चाहिए। तो गाइस देखिए सारे टमाटर और सारे शिमला मिर्च के जो बीज का हिस्सा होता है सबको साफ़ कर दिया है। तो गाइस ये दीदी ने इनको शिमला मिर्च और टमाटर को तेल में फ्राई कर लिया है, क्योंकि पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैदा को पहले गूंद के रखना पड़ता है। तो इसलिए दीदी ने आधे घंटे पहले ही ये गूंद के रख दिए मैदा। और 1 चम्मच इसमें ईस्ट डाला है। और गाइस इसमें 1 चम्मच चीनी डाली है और नमक डाली है अपने स्वाद अनुसार। तो गाइस देखिए हमने आधे किलो नमक इसमें डाल दिए जब तक ये अच्छी तरीके से गर्म ना हो जाए।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. गाइस देखिए पिज़्ज़ा बनके तैयार हो चुका है, बहुत टेस्टी लग रहा है। आपको कैसा लगा आप भी बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा देखने में। गाइस मैं भी अब पिज़्ज़ा खा लेती हूँ। अच्छा लग रहा है, टेस्टी है। तो आप भी बना सकते हैं बिना माइक्रोवेव के, घर पे बना कर देखना आप भी। तो गाइस मैं इस वीडियो को यही है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड